Hello students, as you all know, we are carrying on with the third chapter, geography. Last class we have done the action of rivers. Today we have also started this work of sea waves, but I was just giving a brief recapitulation of the topic that we have done in the last video. I have stopped here only where we have seen the action of the sea. ये जो समुद्र का पानी है, this all sea water that is there, it has continuous interaction, it has continuous action on the rock surface that is there on the sea. देखो, just see, it is mentioned here, features made by the sea waves. So what happens? The erosion and deposition of the sea waves that are continuously flowing, it gives rise to coastal landforms. Coastal landforms means the land that is there just near the sea. समुद्र के पास लगा हुआ जो इलाका है, the landform that is near the sea, that is there, sea waves continuously strike at the rock. लगातार, you know, समुद्र का पानी है, sea waves, sea water is touching the land, and then certain actions happen there, cracks develop. इतनी तेज पानी किसी भी चीज़ पे लगातार अगर लगेगा तो वहाँ पे दरारें पड़ जाएंगी. You know, the cracks are there. And gradually and slowly what happens? They become large. पहले छोटा सा एक छेद होता है, छोटा सा एक small hollow structure is there, and after that it keeps on increasing day by day, and as a result it takes the shape of sea caves. Now what happens, sea caves hai, sea caves mein continuously water is going inside, and the small hollow that is there, it becomes very big. Okay children, so these cavities become bigger and bigger. Only the roof of the cave remains. The top portion that is there, that remains, and the hollow structure keeps on becoming big. As a result, it takes the shape of a cave. ठीक है, अभी ये समझो. Suppose this is all water. ठीक है, I'm showing water now, so I'll show it in blue. Now suppose this is all water. Got it? ये क्या है? This is sea. अभी सपोज यहाँ पे देयर इज सम स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई पत्थर है. सो सी वाटर इज कंटिन्यूसली स्ट्राइकिंग दिस एरिया. गॉट इट? तो यहाँ पे क्या होता है कि एक देयर इज अ हॉलो स्ट्रक्चर मेड, छोटा सा. फर्स्ट इट इज अ क्रैक, फिर it becomes big and it takes the shape of a cave. Cave you all know, cave जैसे ये पत्थर है, पत्थर के बीच में दिस इज अ हॉलो स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ केव. गुफा जिसके अंदर में बहुत सारी जगह है, मतलब इट टेक्स अ शेप ऑफ अ वेरी हॉलो स्ट्रक्चर. इसके बाद क्या होता है कि इरोजन कीप्स ऑन, ब्रेक्स द रूफ, एंड ओनली वॉल्स लाइक फीचर आर वॉल्स रिमेन. Only walls are left. These walls like feature are called as stacks. ये देखो यहाँ दिया हुआ है. Now just see. Here is the hollow structure. First it makes a cave. यहाँ बगल में cave भी है. ये just see. Structure is made, and then इसके बीच में एक छेद हो जाता है. Continuous water is flowing ना. So water is continuously flowing. As a result, the landform that is here will change, and then you have the stack here. This ये लगातार यहाँ पे होते होते पानी जाते जाते a time will come when this will break and it will take a different rock shape, it will take a different form. This is, कहते हैं इसको, just see, it is mentioned here children, it is called as stack. Okay, so just see, it is there. Sea caves are there, sea arc is there, just see, it is here is sea arc. पूरा आर पार, मतलब केव में क्या होता है कि पानी अंदर जाके फिर वापस आ जाएगा. द वाटर इज कमिंग, इट इज गोइंग इनसाइड एंड देन इट इज कमिंग आउटसाइड. केव आर्क में क्या होता है, वाटर गोज फ्रॉम वन साइड, इट विल गो फ्रॉम हियर एंड इट विल पास टू द अदर साइड, दूसरी तरफ चला जाएगा.
and then continuous action happens, then this rock will break. ये देखो यहाँ पे it has broken and it forms a separate rock piece. इसको क्या कहते हैं? This is called as stack. Okay children. So steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called as sea cliff. Abhi I'll tell you, don't worry, picture is not given. So this sea water that is there, it contain, यहाँ पे we have the land. कहीं पे तो समुद्र लैंड से टकराता होगा ना, तो लैंड में लगातार यहाँ पे पानी जाते जाते what happens, this land rises and it takes a very elevated shape. काफ़ी ऊंचा हो जाता है यहाँ पे लैंड, जैसे एक छोटा सा पहाड़ जैसा बन जाता है, बिकॉज ऑफ द सी एक्शन. कंटिन्यूसली सी वाटर इज स्ट्राइकिंग द लैंड, सो इट गेट्स एलिवेटेड एंड दिस इज कॉल्ड एज सी क्लिफ. एंड बीच कैसे बनते हैं? ये सी वेव्स, दीज वेव्स दैट आर स्ट्राइकिंग द लैंड, they bring lot of material with it, sediments. This material is called as sediment along the shores. Along the shores मतलब कि जो समुद्र का किनारा है जहाँ पे there is land where continuously, कभी आपने सी बीच नहीं देखा है? प्लीज़ टेक, कभी मौका मिले गो एंड सी. बॉम्बे है, चेन्नई है, गोवा है, ऑल दी सी बीचेस आर देयर. यू विल वेरी वेल अंडरस्टैंड द सी एक्शन. अगर नहीं जा सकते हो प्लीज़ गूगल, आप इसको देखो, सी बीचेस कैन देखना. तो बीचेस व्हाट हैपन्स दैट सी इज देयर, सपोज दिस इज अ सी एंड व्हाट हैपन्स, दिस इज लैंड. सो सी इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ मटेरियल विथ इट. बालू है और बहुत सारे जानवर हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स सी इज ब्रिंगिंग विथ इट. इट डिपॉजिट्स ऑन द लैंड. तो यहाँ पे जब लैंड पे ऑल दीज थिंग्स मटीरियल्स आर एक्यूमुलेटेड, जमा हो जाता है जब यहाँ पे, देन इट इज कॉल्ड एज अ बीच. ओके, नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड इज आइस. ये देखो पूरा अ ग्लेशियर. जस्ट सी, ग्लेशियर इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ग्लेशियर इज वेरी बिग. यहाँ इतना बड़ा सा आपको ये पिक्चर दिया हुआ है. This is all glacier, a moving piece of ice. Just see. अभी हमने two things पढ़ी. We have already read about two things. One, we have read the work of water, and another one we have seen the work of water. में we have seen river water, and then we have seen the sea water or ocean water. Now अभी water, glacier जो बर्फ है, you understand, glacier is made out of ice. So now we will be understanding the ice water. ice water का क्या action होता है? glacier देख लो क्या है, it is river of ice which to erode the landscape by bulldozing soil. इसके सपोज दिस इज ऑल, ठीक है, ये पहाड़ है एंड दिस इज द रिवर एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस. सो इट कीप्स ऑन मूविंग. सो वन समटाइम व्हाट हैपेंस, व्हेन इट इज मूविंग, इट इज टेकिंग द लैंड विथ इट. ये जो पहाड़ जहाँ पे था ना, वहाँ पे पहाड़ हट के एंड वहाँ पे एक प्लेन लैंड बन जाता है. Again I'll show you. Suppose, just a minute children, suppose this is a hill. Glacier is coming and it will cross on this, it will go through this hill. So what will happen, this hill will fall down, this hill will finish and यहाँ पे पूरा land हो जाएगा. तो this is called as bulldozing soil. Bulldozing मतलब ice is heavy, ice है and it is heavy. And when it is moving, so it will change the picture. Just see, the picture is here. Now this is the glacier. Now when this glacier will cross this area, glacier is coming,
ये छोटा सा पहाड़ आपको दिख रहा है. आफ्टर सम डेज दिस वुड बिकम एब्सोल्युटली फ्लैट. दिस वोंट बी सीन. ये पूरा जो आइस है, दिस आइस शीट क्रॉसेस ओवर द सॉइल. तो by bulldozing soil and stones, what happens? The solid rock behind is the solid rock that is there ना, जो पत्थर होता है, that could be easily seen. And glaciers, what do they carve out deep hollows there. Deep hollows means when the glacier is continuously moving. यहाँ पे जहाँ पे कभी पहाड़ था, चाहे जहाँ पे ज़मीन थी, सपोज पहाड़ नहीं है, ठीक है, glacier is moving in the form of ice. So what will it do? यहाँ पे suppose there is a flat land, plain land है. when the glacier will cross from here, तो यहाँ पे land की जगह पे क्या बन जाएगा? गड्ढा बन जाएगा, hollow. This is called as hollow. जो गड्ढा बन जाता है ना, that is called as a hollow land. And then यहाँ पे there was land. Glacier has crossed here and it has become hollow. So some ice, what happens, gets inside. Some ice gets inside. Then it melts. ये फिर गल जाता है. ये आइस जब गल जाता है तो क्या बचता है? So water is left here. This is all ice. But यहाँ पे क्या हो जाता है कि it deposits and it changes into the form of water. So यहाँ पे ग्लेशियर हैज़ क्रॉस्ड एंड लैंड को उन्होंने फ्लैट करके हॉलो बना दिया है. नाउ इट बिकम्स अ लेक, ब्यूटिफुल. तो फिल्ड विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटिफुल लेक इन द माउंटेन. अब ये सोचो, ये पहाड़ है, गॉट इट, और यहाँ पे एक गड्ढा बन गया. इस गड्ढे में पानी भर गया बिकॉज ग्लेशियर इज पासिंग थ्रू दिस एंड सम of the ice is now deposited here, so it will take the shape of a lake. Beautiful lake is formed here and ये mountain के बीच में आपको ये lake नजर आएगा. Imagine how beautiful it would be. Got it? And glacier also brings glacier जो the glacier that is going here, it is bringing lot of sand, silt. Silt is mud. मट्टी जो होता है ना, मट्टी, गीली मिट्टी जो होती है ना, उसको silt कहते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लेशियर वॉट एवर मटीरियल इट इज़ ब्रिंगिंग विथ इट, ये एक एक जगह पे जमा हो जाता है. लेक है, लेक के पास में आपको देखेंगे आप, बहुत ही हरा भरा होता है. और यू कैन फाइंड सम मड, और यू कैन फाइंड अ वेरी गुड पार्क. Some people make, matlab in some of the areas in the mountains you will find ki lakes, beautiful lakes are there. Near that lot of trees are there. So these are formed because of the deposit that is brought by glacial moraines. ये जो material, जो ice, the material carried by the glacier, glacier is ice. तो glacier carries with it rock, big and small, sand and silt gets deposited. जहाँ जहाँ पे ये ग्लेशियर जा रहा है वहाँ पे it is depositing here. ये यहाँ पे हॉलो हो गया था, लेक था, तो here. तो ये जो डिपॉजिट है, these deposits are called as moraines. क्या कहते हैं इसको? moraines. Just a minute children, I'll show you here. ठीक है, ये आप ग्लेशियर देख रहे हो, ग्लेशियर इज मूविंग, इट्स मूविंग. सपोज यहाँ पे लेक फॉर्म हो गया एंड इसके साथ जो मटेरियल आ रहा है ना, वो यहाँ पे सारा जमा हो जाएगा. इट विल गेट डिपॉजिटेड हियर. दिस विल बी कॉल्ड एज मोरेन्स, ग्लेशियल मोरेन्स. ओके, नाउ वी विल बी सीइंग द डेजर्ट. देख रहे हो ये, एंड डेजर्ट में क्या दिखता है? यस चिल्ड्रन, वेरी गुड, कैमल. ओके, whenever somebody goes to desert you make it very sure that go for a camel ride. बड़ा मज़ा आता है. Then now we have seen the
अभी तक we have seen the work of water. Okay. Now what we will be talking about? We will be talking about wind. एक तो पानी है, because we are talking about two things. One is erosion and other is deposition. Deposit जो हुआ है सामान, deposition and erosion. These are the two forms that we will be discussing here. So suppose a waiver visit a desert, try to collect some pictures of sand dunes. कभी अगर आपको मौका मिले राजस्थान जाएं, राजस्थान में you will see lot of land pieces, a lot of areas जहाँ पे कि आप where you go and you find sand dunes. So active agent of erosion and deposition. So, अभी desert area में you don't get water. Do you get water in desert? No children. It's hardly found. You hardly find water in desert area. Desert में what do you see in desert? You can see rocks in the shape of mushroom. Mushroom देखा है ना? Like this. पेड़ नहीं है. This is not a tree. But mushrooms are in this form only. छोटे छोटे होते हैं. Lot of together it is there. नीचे जो है ना it is hollow from inside. ये इस तरह से ही नीचे का स्ट्रक्चर होता है. So this is called as mushroom. तो अभी क्या हो रहा है कि सपोज यहाँ पे some rock is there. हाँ, and wind is flowing. wind पहले वाटर था, अभी क्या है? विंड, हवा चल रही है, बड़ी तेज हवा चल रही है. तो यहाँ पे क्या होता है? हॉलो करते 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 क्या होता है? दिस कट्स एंड इट हॉलो स्ट्रक्चर इज मेड हियर. ये यहाँ पे कटता चला जाता है बिकॉज ऑफ द वेरी फोर्स्ड एक्शन ऑफ विंड एंड इट इज फॉर्म्ड इन दिस शेप. और कुछ दिन के कुछ हवा इधर से भी चल रही है, हवा इधर से भी चल रही है, and then this kind of rocks are made which is called the mushroom rocks. अभी मैंने जो आपको बताया, just now I told you winds erode the lower section of the rock. erode, ठीक है? rock is here and यहाँ से जो है rock piece जो है वो हवा के वजह से कम हो जाता है, ठीक है? it decreases the rocks that are here and then it takes this shape. Continuous action of wind. So winds erode the lower section of the rock more than the upper part. So such rocks have narrow base and wider top. I told you narrow base and wider top. ऊपर में wide हो जाता है, नीचे में narrow होता है. So what happens when the wind blows? जब बहुत तेज हवा चलती है, it lifts and transports sand from one place to another. Now you can see the sands here. See, this is called as crescent shaped. Okay. हवा चल रही है, हवा चल रही है. So sand, you know, sand is very light, na? So this sand that is here, it moves to other place. और जहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, it will go and deposit at some other place. Got it? तो when the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another, and when it stops blowing, हवा हमेशा नहीं चल रही ना, the wind is blowing, but certain places then it stops, and where it stops there it deposits the sand that they have brought it with it. So these are called sand dunes. इसको क्या कहते हैं? sand dunes. And small hills, मतलब जो sand का hills बनता है ना, this kind, this is called as dune. क्या कहते हैं इसको? dune, sand dune. So the grains of sand are very fine and light, बहुत छोटे छोटे होते हैं, and wind can carry it over very long distances. ये जो हवा चलती है ना बड़ी दूर तक, the wind is taking it to very far off places.
I mean, it is hundreds of kilometers that these sands are carried by the wind, and where it deposits the sand, that place dunes are formed. And ये dunes. Now, when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. हवा चल रही है, हवा चल रही है, ठीक है. This is wind. And it is depositing all this sand at one place. It is carrying sand particles ना, ये सब sand है. देखो, the dots that I have made, this is all sand, and it goes and deposits at one place. ठीक है, this is all sand. So when it goes and it deposits at other place, this sand is in the large area, the sand that is deposited is called as loess. What do we call it? We call it loess. अब आप सोचोगे ये लोईस कहाँ मिलते हैं? It is found in China. China में भी some desert areas are there. There we find loess. So we have done, children, we have done the action of work of ice. I'm sorry. I'm just revising. Once you should know what all things we have done. I hope you all have made this diagram. If you have not made it, you have to make this diagram. Then you have to make the diagram of volcano as well, children. Then the origin of earthquake, diagram of earthquake that you have to make. Now some students were asking what are P waves, S waves. P waves are अभी जैसे जो लहरें हैं ना, whatever is there, some of them are carried in the form of longitude, ऐसे. ओके, ये वेव्स ऐसे जो जा रही हैं, जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, दिस वेव्स आर द P waves. some waves are going like this. ठीक है, तो इसको जब when you see it like this, तो it takes a form of S का शेप बन जाता है. तो these are called as S waves. Then we have L waves or surface waves on the earth. ठीक है, the waves that are formed. Just a minute children. ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है. Just see on the surface the movement that is happening, it is happening like this, continuous. So these are called as L waves. अब इसको आपको पता करना था. Then earthquake के बारे में we have discussed one example, that was the earthquake that had happened in Bhuj in Gujarat. Then earthquake, how do we save ourselves from the earthquake? When the earthquake has come, suppose earthquake has come, so how do we prepare ourselves? So you find a safe spot, a safe place where you can go and take rest. You have to stay away from the earthquake and you have to be prepared. कहीं पे भी, कभी भी, because earthquake will not say that it is coming and we cannot find out also. Waterfalls, please see these waterfalls that are mentioned here. Water, major landforms that happens due to the action of river. River actions we have already seen and we have already done. It is changing the landscape, the complete land is changing, and the river goes at steep angle over very hard rocks, steep valleys there, and it forms a waterfall. Then we have rivers. When the rivers enter, I'm just sorry beta,
when the rivers enter the land, so they form this kind of shape. So this twist and turns that are there na, these places are called as meanders. क्या कहते हैं? Meanders. ये meanders जो होते हैं, फिर कभी कभी क्या होता है, ये meanders अलग हो जाते हैं और यहाँ पे एक स्मॉल सा लेक फॉर्म हो जाता है. This is called as Oxbow Lake. Then बाढ़ आ जाती है. Sometimes what happens, this water enters the city and deposits all its material there. जितना भी वो अपने साथ sand and mud and जो पेड़ पौधे जो नदी अपने साथ लेके आ रही है, it deposits on the land, and this kind of a land is called as a floodplain. So river approaches the sea, the water level, the speed of water decreases, and then the rivers start breaking into many small paths. These are called as distributary. What do we call it as? We call it as distributary. So distributary are there. Then today we have studied about the sea waves, how the sea waves cause actions. Sea arcs is there. Then we have also studied about the glaciers. Glaciers are big pieces of ice. Glaciers are, again it is mentioned here, rivers of ice. पूरा का पूरा नदी जो है वो ice में convert हो जाता है and it takes the form of glacier. So because of this moving ice, lot of changes happen on the earth's surface. How does these changes happen? That we need to understand. और उसके बाद ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर अपने साथ ये the ice that is there, it also brings lot of material with it and deposits it here and there. जो ice का sheet है वो अपने साथ इसको लेके आते हैं और बहुत चीज़ें जो है इधर उधर डिपॉजिट कर देते हैं, तो it is called as moraines. Then we have got certain features, especially in the desert area we get these features. Mushroom rocks are there, sand dunes are there, loess जहाँ पे sand deposit हो जाता है. There are two words. Children keep on asking, ma'am, what is loess? One is loess and one is levees. ये तो लोइस है, sand deposit in large area, बहुत जगह पे जब sand is deposited, that is called as loess. and ये देख लो, मैं आपको दिखा रही हूँ बार बार, आप you all ask, you all always have. तो जब फ्लड आता है, जब बाढ़ आती है, तो बहुत सारा मिट्टी इसके साथ आता है. दिस सॉइल इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट. कहीं पे जाके ये जब मटेरियल जमा हो जाता है तो वी फाइंड अ फ्लड प्लेन. एंड ये जो फ्लड, इसके क्या होता है कि रिवर्स जो फ्लो कर रहे हैं, तो ये जो लैंड एरिया है ना, ये लैंड एरिया थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है. इट्स हाइट इंक्रीजेस. रिवर्स इज फ्लोइंग एंड दिस इज लैंड. सो रिवर के साथ जो मटेरियल आ रहा है, इट गेट्स डिपॉजिटेड हियर. व्हेन इट गेट्स डिपॉजिटेड हियर, दिस, तो यहाँ का जो यहाँ का द साइड वेज हाइट दैट इज देयर, दिस हाइट इंक्रीजेस. सो यहाँ जब रिवर के पास, आप देखो कभी गंगा नदी के पास गए हो, दूसरा साइड आप देखोगे थोड़ा सा उठा हुआ है, हल्का सा ऊंचा रहता है, तो दैट इंक्रीज्ड हाइट इज कॉल्ड एज लेवीज. So I hope now your levees and loess is clear. Now we have come to the end of the chapter, children. We will be doing the exercise portion. I'm sorry. And lot of crossword puzzles are given here, some actions are given here, some activities are given here. These activities are very interesting activities. Okay, so just check that you all complete these activities. Activities you can do on your own. It is a play way thing. आप खेल कूद के भी इस कम चीज़ों को कर सकते हो.
But in the next class, I'll be discussing the question answers, children. Till then, just keep revising. Thank you, children. All the best to you, children.